हाय हेलो नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। आज की वीडियो में वी आर बैक अगेन विद 2 मिनट ट्यूशंस। आज हम बात करेंगे रेंट फ्री फिट आउट पीरियड के बारे में। कमर्शियल रेसिडेंशियल क्यों होता है, किसके लिए होता है, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए होता है, कितना होना चाहिए। My name is Ravi Keval Ramani and I'm a second generation real estate agent based out of Mumbai. मेरे कंपनी का डिटेल्स और मेरा डिटेल्स is right in the description. Please check it out. Remember to subscribe if you're into Mumbai real estate. Your 2 minutes starts. रेंट फ्री फिट आउट पीरियड के टाइम पे लैंडलॉर्ड्स रेंट नहीं लेते हैं फ्रॉम द टेनेंट्स. दिस टाइम पीरियड इज गिवन टू द टेनेंट्स टू डू एनी काइंड ऑफ रेनोवेशन वर्क इन द प्रॉपर्टी दैट दे आर टेकिंग ओवर फॉर लीव एंड लाइसेंस. रेंट फ्री फिट आउट पीरियड किस लिए दिया जाता है? इट इज ओनली फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज. हाउएवर ऑन वेरी रेयर ओकेजन्स मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे भी रेंट फ्री फिट आउट पीरियड दिया है. रेंट फ्री पीरियड रेनोवेशंस के लिए ही दिया जाता है. कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो नॉर्मली बॉक्स स्पेसेस 4 स्क्वायर बॉक्स स्पेसेस में होते हैं. उसके अंदर जो भी रेनोवेशन करना होता है दैट इज ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेनेंट. अ लैंडलॉर्ड cannot keep on renovating the same property based on the tenant's business model. So in commercial property, whether it's a shop, office or a showroom, it is the responsibility of the tenant to renovate the property based on their business model. Point number 2, rent free fit out period. How long should it be? कितना लंबा होना चाहिए? फिट आउट पीरियड डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी के साइज के ऊपर. छोटी प्रॉपर्टी के लिए कम टाइम होता है, बड़ी प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा टाइम होता है. एज अ रूल ऑफ थंब, अगर आपकी प्रॉपर्टी समझो 300 से 500 स्क्वायर फीट है तो 7 दिन से 15 दिन तक का एवरेज फिट आउट पीरियड होता है. अगर आपकी प्रॉपर्टी करीबन 2000 से 3000 5000 स्क्वायर फीट के होते हैं तो 15 दिन से 30 दिन तक होता है. And for larger properties, it even goes up to around 45 days. यानी 1.5 महीने का rent free fit out period होता है. That being said, I have negotiated rent free fit out period for up to 120 days on some massive properties. These properties are roughly about 50,000 square feet and above. कभी कभी कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए भी अगर टेनेंट ने प्रॉपर्टी ली, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं या तो फिर सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं या स्कूल्स के लिए होते हैं, तो सो इन दोज केसेस रेंट फ्री पीरियड जो रहते हैं वो कभी कभी ज्यादा भी होते हैं. 120 दिन के लिए भी होते हैं, 4 महीने के लिए. फर्निश्ड प्रॉपर्टीज में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर टू गिव यू द प्रॉपर्टी इन द कंडीशन दैट यू वांट इज मूव इन. कोई टेनेंट अगर फर्निश्ड ऑफिस में या फर्निश्ड शॉप में जाना चाहता है तो उसको ज्यादा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है. उसको चाहिए अपना कंप्यूटर सिस्टम लेके आके बैठ जाए सीधा ऑफिस में एंड स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली. इन सच सिचुएशंस देयर इज नो रेंट फ्री पीरियड, but it is the responsibility of the property owner to give the property to the tenant in a nice and clean condition. Coming to the last point, is the rent free fit out period negotiable? Yes, उस पे भी आप negotiations कर सकते हैं. For example, there are times where large corporate companies and banks आपके पास आएंगे, बोलेंगे मेरे को आपको जगह पसंद आई है, लेकिन they come with the terms or conditions, पूरे लिस्ट लेके आते हैं कि ये हमारे terms और conditions है और हम इस पे negotiate नहीं करते हैं. Those are also negotiable. वो negotiations कितना होता है? It's always a thin line that you walk in there. Remember that you are dealing with corporate employees. वो आज रहें, कल नहीं रहेंगे वो कंपनी के साथ, वो कोई और कंपनी के साथ रहेंगे. So you have to negotiate those terms and conditions in the beginning of the leave and license. बाद में फिर जो रहता है वो आप किसको आदमी को कहाँ ढूंढने जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो it's not in your control. So as a property owner, if you have a large company, yes, they do have an upper hand in negotiations. Yes, they will be a stable company that will stay in the property for a longer period of time, but that does not mean that you cannot negotiate. It is always better to let go of a one-sided deal than to suffer the consequences of that one-sided deal for a period of 3, 4, 5 years. What has been your rent-free fit-out period? Please let me know in the comment section below. Please check out my other 2-minute tuition videos. There will be an icon of the entire playlist right here. Remember to subscribe if you're into Mumbai real estate. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो just give it a thumbs up. Yes, that's it for now.